Hello everyone, this is Sumit and welcome to PETROGATE PYQ series, and in this session of PYQ series we will discuss the question which has come from the offshore technology in 2018. Okay, so only the single question that has been asked in offshore from the offshore in GATE 2018, you can see this particular question. Okay, so this question says the factor on which the selection of offshore platform for the reservoir does not depend. Actually what happened कि sir you are telling कि sir different vessels or like rig you are having or platform you are having, so what are the criteria which vessels you are to taking from this particular well, so on what are the factors that will depends. Okay, means जैसे जैसे हम लोग different vessels यूज करते हैं और कर सकते हैं, वो जनरली चीजों पे किस पे डिपेंड करता है. एक तो सर मुझे पता है कि वाटर की जो डेप्थ है, वाटर ऑपरेटिंग डेप्थ है, उस पर तो वो करता ही है. क्या और भी ऐसे फैक्टर हैं क्या और भी ऐसे फैक्टर है क्या? सो इज देयर एनी फैक्टर्स एक्सेप्ट द वाटर डेप्थ? बिकॉज वाटर डेप्थ वी हैव सीन कि बिकॉज ऑफ डिफरेंट वाटर ऑपरेटिंग डेप्थ वी विल सेलेक्ट डिफरेंट वेसल्स और रिग्स, नो प्रॉब्लम. सो इज देयर एनी फैक्टर except the water depth, is there any factor which depends of your selection of rigs? कि सर नहीं, वाटर ऑपरेटिंग डेप्थ पे, इस वाटर डेप्थ पे मैं ये भी यूज कर सकता हूं एंड इस वाटर डेप्थ पे मैं ये भी यूज कर सकता हूं. सो क्या मैं अब देखूं कि कोई और भी क्राइटेरिया है क्या कि इनमें से कौन सा बेटर होगा? ठीक है, सो यही इसने बोला है, ही इज टेलिंग अस कि व्हाट आर द फैक्टर इज नॉट देयर विच इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द सिलेक्शन ऑफ वेसल्स और रिग्स. ओके, सो वाटर ऑपरेटिंग डेप्थ, यस, वाटर ऑपरेटिंग डेप्थ इज योर फैक्टर और मेन फैक्टर. अकॉर्डिंग टू वी विल सेलेक्ट डिफरेंट वेसल्स. ओके, नेक्स्ट इज whatever the reservoir fluid property. If you are having different fluids, so we will select different vessels. Okay, suppose किसी fluid में water cut ज्यादा आ रहा है, ठीक है, so मैं क्या करूंगा, तो then what I will see कि मैं प्रोडक्शन के टाइम पे मैं कुछ ऐसा वेसल्स ले लूंगा जहां पे मेरी कुछ सरफेस फैसिलिटी भी होंगी जो उसको क्या सेपरेशन करने लगेगी. ठीक है, तो मैं वो चीज भी मैं यहाँ पे देख लूंगा. सो इट मीन्स रिजर्वर फ्लूइड प्रॉपर्टी इज समवेयर दैट विल वेरी मिनिमम स्केल्स दैट विल डिपेंड्स ऑन डिफरेंट वेसल्स. ओके, तो ये भी मेरा एक फैक्टर बन सकता है. नेक्स्ट फैक्टर इज सी बेड कंडीशन. यस, ये तो एक मेन फैक्टर है, दिस इज द मेन फैक्टर. यू विल सी इफ योर सी बेड इज योर सॉफ्ट काइंड ऑफ सी बेड और टिल्टेड काइंड ऑफ सी बेड और योर हार्ड काइंड ऑफ रॉक, सो दैट विल डिपेंड्स योर सिलेक्शन ऑफ योर वेसल्स और रिग्स. ओके, तो डेफिनेटली ये हो सकता है. नेक्स्ट पॉइंट इज बेस्ट केस ऑफ वेदर फोरकास्ट. मतलब सर मतलब ये कि आपका जो इन्वायरमेंट है, वट एवर द इन्वायरमेंट यू आर हैविंग, सो दैट विल नॉट so harsh environment, that is normal or best weather. So it means weather is our favorable, it's going in our favorable, means I don't take different selection of your vessels. Means suppose I am telling you, sir, this vessels you are having A, this vessels you are having B, this is also can be operated in 8,000 feet or this is also can be operated in 8,000 feet. Okay, means you can take an example. Suppose this is your semi-submersible, okay, and this is your drill ship. Drill ship can be used 12,000, I am writing completely 12,000, and this will use like 10,000, but 8,000 we can use both because this can be up to 12,000, this can be up to 10,000, but 8,000 or 9,000 feet we can use both. But now the selection will on different parameters. Sir, water operating depth के बेस पे I will select कि either आप ये वाला यूज कर लो, either ये वाला यूज कर लो. So according to the water operating depth you can select any one of these. But there is a many more factor is there that can be emphasis. Sir, you have to select this one, you have to select this one, you have to select this one. So that is another factors. Means हो सकता है कि may be harsh environment हो. In harsh environment maybe drill ship will be more better. Okay, in harsh environment maybe semi-submersible more better. वहां पे मैं क्या देखूंगा, I will see which will be more suitable vessels in your harsh environment, because in both in this particular depth यहाँ पे दोनों यूज किया जा सकता है, but which will be more suitable in harsh environment. But my dear, there is a very soft kind of environment, very best forecast weather you will see. Means weather के बेस पे you will not have any problem कि आप कोई सा भी ले लो. ठीक है, weather के बेस पे यहाँ आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला, बाकी कोई और चीजों पे करने वाला तो मैं उसकी बात नहीं करता. ठीक है, तो वेदर के बेस पे मैं यहां सिलेक्शन नहीं करूंगा. अगर मेरा वेदर बहुत अच्छा है
समझ रहे हो? तो मुझे फ्यूचर पता चल गया है कि वेदर फोरकास्ट इज बेस्ट, ठीक है। तो इट मीन्स इसके बेस पे मैं कोई सिलेक्शन नहीं करने वाला। इट मीन्स आई एम नॉट सेलेक्टिंग एनी काइंड ऑफ वेसल्स अकॉर्डिंग टू वेदर बेस्ट वेदर फोरकास्ट। सो द ऑफशोर प्लेटफॉर्म फॉर रिजर्वर डज नॉट डिपेंड। सो आई थिंक ऑन दिस फैक्टर इट डज नॉट डिपेंड, or of this factor the selection of vessels is not depend. Okay, in this case agar listen, if the question says ki harsh environment, harsh weather environment, so definitely I will select based on this, because the selection is you have to do, because there is a harsh environment, so you have to select one of the best vessels which can use in harsh environment or bad weather condition. Okay, but there is a very best condition, so either you can take this, either you can take this, weather is not disturbing you. Okay, so this will be your right option D, ki which is not the factor to select your vessels. Okay, so option will be D, right option. Okay, so this is your like the single question which has been asked in 2018 from the offshore. So this is all about today. Thank you very much. Have a nice day.